Okay, picture this. It's 2023 and sitting on an old chair, editing on not so fast PC with the dream bigger than my RAM size. No team, no fancy mic, just a vibe and a YouTube tutorial at 2 a.m. bro. Fast forward to now, client project and me taking to camera like we are a content creator. But how did I get here? Let me take you back. But for introduction, hi, my name is Nikhil and I'm a 17-year-old freelance video editor working with lots of good clients and also making some good cinematic and also motion graphics videos. I'm also a content creator making YouTube videos in LinkedIn post and Instagram. Coming back to my backstory, I'm just a regular guy from Haryana, no film school, no editing background. In fact, my editing journey started because I saw one of these motivational reels and I said myself that I can make this same. And guess what? I have a PC that sounds like an aeroplane. But क्या करें, जब जुगाड़ हो तो सपने भी edit हो जाते हैं. I started watching tutorial like it was a Netflix. I was watching lots of Premiere Pro, After Effects content that how can I edit these type of videos, and I learned a lot from these. My first ever video is very cringe. Slow cuts, no music sense, and transition are just trash. Even my mom got a headache watching it. But here's the thing, I didn't stop. I kept editing random videos, random clips, reels, birthday, montage, lots of videos I edited for practicing. And even I made a trailer for my friend, Street Dog. It got 5 views, all from it. But hey, it progressed. But now you will ask me that, hey Nikhil, how you get your first client? I will say I get my first client by my network. So what happened was I was going somewhere and I meet my friend who wants some video editor. I said him I can do video editing and we talk and I said him please can you give his phone number so I can talk with him, and he gave his friend number and I talked to his friend and say that hey brother, I can edit your videos, so can we do a trial work so you can understand my work type, and if it is good then we can work together. And I make a good trial video for him and he said he really likes my trial work, so he gave me 10 videos of contract, and for one video he will give me 100 rupees. I know it was really low pay, but for me when I started I didn't have any money and I never make any money from myself, so it's like something I find a treasure for me. So I didn't think too much about money. I just want to gain more skills so I can grow myself. There are lots of mistakes that I did and I learned from it. The client that I'm working with him is also very good. If there's a mistake, then he said me that okay, if there's a mistake you can take time and you can improve those mistakes, and उसने मेरे को सब्सक्रिप्शंस के लिए भी मदद करी है. लाइक काफ़ी ज़्यादा मेरे को जैसा मान लो कोई भी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत काफ़ी एडिटिंग के लिए उसकी मदद हो जाए वीडियो एडिटिंग के लिए, तो वो मेरी उस चीज़ की मदद कर देता था भाई. काफ़ी अच्छा क्लाइंट, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट क्लाइंट ही मुझे अच्छा मिला अपना सही में. आफ्टर दैट आई यूज दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एज माई सैम्पल. Every time I DM someone, I send this type of project and I say, भाई ये देख मैंने बनाया है. I post edit on my Instagram, LinkedIn, YouTube, even WhatsApp stories. One day when people ask me for छोटी reels, intro, trailers, and I said yes to everyone, but I also made lots of mistakes, bro. Took free work without any clear time, forgot to charge for reviews. Here are my golden rules. Write them down. If this is needed, tattoo them. First, the worst mistake that I made. वैसे मैं बहुत worst mistake करी है, but ये उसके अंदर आता है. Like, don't wait to be ready. मैं तुम्हें सही बोलूँगा, wait मत करो. तुम्हें भाई अब जब आएगा वो तभी करूँगा. शुरू कर दो. तुम शुरू कर दो. अगर तुम शुरू नहीं करोगे वो चीज़ नहीं सीख पाओगे. Second, build a mini portfolio. तुम्हारा पोर्टफोलियो ज़रूरी भी नहीं है तुम बहुत ही तगड़ा पोर्टफोलियो बनाओ. लाइक वैसे आज को गूगल ड्राइव को इतना नहीं सही बोलते, बट अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो गूगल ड्राइव का यूज़ कर लो. आजकल तो कैनवा अलग से तुम्हें वेबसाइट वाला सपोर्ट देता है, तुम उससे कर सकते हो. और आजकल तो फ्री वेबसाइट्स टाइप के आते हैं जो लैंडिंग पेज होते हैं
तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा। तो एक मिनी पोर्टफोलियो बनाओ, बट अगर तुम जमा ही नए हो तो गूगल ड्राइव का कर लो। जब तुम्हें 1 या 2 साल की एक्सपीरियंस हो जाएगा कोई वेबसाइट वगैरह का ट्राई कर लेना, ठीक है। बट एज अ खतरनाक वेबसाइट अब बनाने की जरूरत नहीं है फॉर फ्रीलांसिंग। वो बात अलग है, अगर तुम एक एजेंसी हो तो तुम्हें वेबसाइट एक प्रॉपर मैंडेटरी है, ओके। थर्ड, डीएम लाइक अ ह्यूमन। हमारे पता क्या आईडियो में एक्चुअली फ्रीलांसर्स वगैरह हम ढूंढने का ट्राई कर रहे थे, तो हमने गूगल फॉर्म निकाला। उसके अंदर इतना ज़्यादा हमें देख के ही समझ आ गया था ये ChatGPT से लिखा हुआ है। लिखो आते थे टेक्स्ट के अंदर कॉमास वगैरह, वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ ChatGPT लिखता है। ह्यूमन एज अ टेक्स्ट वगैरह, और जिसमें एज अ प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं जो ह्यूमंस नहीं यूज़ करते हैं, उससे भी पता लग जाता है। So please DM like a human. Fourth, don't undercharge too much. Yes, for starting you need to charge some less money, or sometimes you need to do free work. But when you are in good stage, you should charge your money more, and also prioritize your time, because time is money. Money is time. So focus on your time, money. But for starting, try to do some low wages or free work so you can get connections with other. I think I would say if you do free work, for starting you get lots of connections, I would say. So try to do these. Fifth, post your work continuously. तुम कहीं पे भी पोस्ट करो, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फायदा मिलेगा। इंस्टाग्राम का CEO, यूट्यूब का हर कोई बोलता है तुम्हें रेगुलर अपलोड करोगे तो तुम्हें एंगेज मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, तुम्हारा चैनल ग्रो होगा। तो हमेशा रेगुलर अपलोड करो, ठीक है। You know what, I am still growing. I'm not a 6-figure video editor with a studio in Dubai yet. But I'm still building, bro, learning work, and that's matter, I would say, for me, and तुम्हें भी matter होना चाहिए. So if you are watching this and asking yourself, can I do it, bro? Yes. I had nothing. I had a good PC, late night hunger for something more. Remember, even your first edit will trash, but your 10th is better. Just keep creating. There's a line of a Harvey Specter, in Suits. Life is this, I want this. रुको, कैमरा में नहीं है, रुको ऐसे कर दो। लाइफ इज दिस, आई वांट दिस। मुझे इतना ऊपर, ये लाइफ मेरी ऐसे है, मेरे को ऊपर तक जाना है। तो मेहनत करो, हो जाएगा। किशन जी की भी ये लाइन थी, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। इफ दिस स्टोरी हेल्प, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स। इफ यू आर ऑन एडिटिंग जर्नी, कमेंट लेट्स गो निखिल। मोर एडिटिंग टिप्स, freelance breakdown, and my honest journey drop every week. Peace.